Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Hi, Divya. How are you? Good morning. Good morning, Fine, ma'am. ma'am. Good Uh, morning, ma'am. I want to give a brief introduction about you, ma'am. Uh, Okay, may I please, start? please go ahead. Okay. Thank you, ma'am. On behalf of University of Kota Research Department, I, Divya Sharma, welcome you, ma'am. Today we have with us eminent speaker and guest lecturer, Dr. Shweta Vyas. Ma'am have completed her post-graduation from JNV University, Jodhpur, and received doctorate in chemistry in 2003. Dr. Vyas awarded Junior Research Fellowship at Defense Lab DRDO, Jodhpur, to develop nanocomposites materials. She passed CSIR UGC NET exam in 2002 and worked as a lecturer at Adarsh College, Jodhpur, and currently working as an assistant professor at University of Kota since 2012. She has successfully completed an one international Asian Indian collaborative project 2019 to 2022 funded by DST New Delhi, and one national startup project funded by UGC 2004-6. Dr. Vyas received Professor H.J. Arnikar Award by Indian Council of Chemists, Agra 2023, INSA Visiting Scientist Award of Indian National Science Academy, New Delhi 2022, and Research Excellence Award by Indian Chemical Society, Kolkata 2021. One scholar completed PhD under ma'am supervision, and four are pursuing. She has published 32 research articles in reputed peer-reviewed journals. Dr. Vyas' research interest is in the field of green chemistry, water pollution, kinetics, nanomaterials, synthesis, etc. I welcome you, ma'am. Please start the session. Thank you, Divya. Thank you for your kind reference to introducing me. I hope my Thank you, screen ma'am. is visible to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Visible. thanks. So let us start our. I welcome on behalf of University of Kota, first of all, our new research scholars, those who have joined our university as a scholars in different affiliated colleges. So it's a great pleasure for me to see a huge crowd of researchers, because research is the basic backbone of the society which we need to develop the criteria to make our India Vikasit Bharat, which is the theme of women. You know that Women's Day is going to become, and Vikasit Bharat is an approach which is applied to Science Day as well. So I hope the youngsters joined today would become the backbone to develop our research process and methods in the field of research of India. Wish you good luck for your upcoming lectures. And let us start my topic today, that is research method and process. May I ask someone to unmute? Those who have already unmuted, please mute themselves. Okay. So till now you have joined your research भारत classes. सॉरी मैम, I भारत hope you रत्न have got शायद आप introductory unmute classes हैं सर. regarding. Yes, Divya? मैम सम हो गया. Okay, I think Bharat Raj was unmuted himself, and now he's shown me the thumb that he has done muted himself. Thanks, Bharat. I have seen, no doubt, no issue. So let us start today's topic, that is conclusion of all your process. Because a process starts with various steps. You know, a single step is enough to get your success. But the first step is very tough to go ahead. When you get the first step in the right manner, you can go ahead to your destiny. You can decide your, future. So it's the criteria how we decide ourselves in a right motto with the aim of Vikasit Bharat to the, society benefits. We have to consider these all benefits in our future scenario
Whenever we start our research work, it's my humble request to you all that whatsoever would be your research topic, consider first what you are going to do and whether it is beneficial for ourselves as well as society. So, what motivated you to carry out research? Definitely to desire a degree. Doctorate degree is far ahead from everyone. You know, it is the after DSC, it is the second highest degree. However, I am considering now for go ahead with the DSC. Being a doctorate is not enough to get it. So, desire to get a degree and studies is, you know, your desirous manner can go ahead at every level. Desire to get respectability. You people are respecting me. I hope so, because I am a doctorate in chemistry and you all are gathered here to learn something from me. Desire to face the challenges for solving the unsolved problem, which I mean for you. That we want to unsolved problem, take over and get that challenge to, you know, accept that. We want that the society would get benefit from our knowledge or our experience to resolve anything which is unsolved, because unsolved puzzles are making us, you know, tough to maintain our lives at any level. Desire to get intellectual joy, obviously being an intellectual person will give us joy. We are satisfied, self-satisfied, and doing some creative work make our confidence booster. I hope so. You are acquainted with mixed language or English is good enough, because you belong to scientific field. As I told, the today's generation is belonging only to the science stream. So may I go ahead with Yes, some ma'am. Hindi Mode as of well? communication bilingual, ma'am. Okay, definitely. I will try my level best because I belong to Hindi medium as well. No issue. Hindi is our mother tongue and we have to respect that as well. So हमें research के लिए क्या motivate करता है? It is more important. Why you are considering? I mean to say, we are starting our research work, desire to get research degree. There are some motivation because of that you have joined. Definitely the job criteria is the first thing for anyone, because the economic crisis in any family will make up tough to live togetherly. So I hope so, but the desire to get all other things are parallelly running in your mind. कि हमें केवल डिग्री लेकर के इकोनॉमिकल वायबल नहीं होना है, हमें सोसाइटी को कुछ अच्छा देना है. इसी सोच के साथ हमने डॉक्टरेट की डिग्री को बनाने के लिए, अपने आप को डॉक्टर बनाने के लिए ऑप्ट किया होगा. सो आई होप दैट यू कंसिडर व्हाइल यू चूज योर सब्जेक्ट कि हम किस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसका हमारी सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा या हमारे देश के विकास में हम किस तरह सहयोग कर सकते हैं, वो हमें सोचते हुए कहीं ना कहीं अपनी रिसर्च को शुरू करना चाहिए. Desire to involve in service of society. I have shown you the PPT first, which is shared with you. Let me move ahead. Obviously, you know the careful study and inquiry as per Oxford Dictionary is decided that, especially through the search of some new facts in any branch of knowledge. There are so many definitions considered by others, one and others. You can see कई डेफिनेशन रिसर्च की है और अपने आप में ये नाम बता रहा है कि इट इज अ सर्च ऑफ सम न्यू फैक्ट्स. New point of view of thinking can also be a new fact. But you will have to consider all the things in your scenario that what you are going to do. We can consider different definitions given by Clifford Woody. Research comprises defining and redefining problem, formulating hypotheses or suggested solutions, collecting, organizing, and evaluating data, making deductions and research conclusion, and at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the hypothesis you develop in your mind. There are so many definitions which you have already learned. Research is a systematic effort to gain new knowledge, something new logical approach. The views can be different. The logical approach can be different because person to person mentality changes. You know, my view of thinking to help society is different. Your view may be another. बट हमारा व्यू कोई भी हो, सबका भला सबसे साथ होना चाहिए कि मेरा हो रहा है तो नो डाउट मैं अगर डॉक्टरेट की डिग्री ले रहा हूं या ले रही हूं तो उससे हमारे
करने जा रहा हूँ उससे मेरा भला होगा, तो मेरे साथ मेरे सोसाइटी में रहने वालों के लिए मैं अपना और दूसरों का क्या अच्छा कर सकता हूँ, इस थिंकिंग के साथ हमें रिसर्च का पहला स्टेप लेना चाहिए। हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंगली रिसर्च में आप डिग्री, आपको पता है नेसेसरी, पहले कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, इट डजंट मैटर, बिकॉज द मोटिवेशन बिहाइंड रिसर्च आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि यहाँ बहुत सारे मोटिवेशन हो सकते हैं। तो हमें अंडरटेक जो काम करना है, हमारा मेन एम है अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ टू गेन द नॉलेज टू हेल्प द सोसाइटी टू अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें वो देखते हुए अपने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए रिसर्च करने का एम बनाना चाहिए कि हमारी रिसर्च किस तरीके से रिसर्चर्स के लिए या सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो सकती है। सो इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप बिकॉज आई एम गोइंग टू discuss the whole method and the process. Till now, you have discussed so many topics. I don't know your timetable. That's why I don't know how much you have gained. Systematic process of searching facts. We have to understand the nature of problem. First of all, which problem? I told you unsolved problem. Observation is the key to unsolved problems. You have to be so observing. You know, the science start with observation. Without observation, you cannot be able to collect the facts. अच्छा ऑब्जर्वर होना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक साइंटिस्ट के लिए, एक रिसर्चर के लिए, बिकॉज हम जो चीज ऑब्जर्व करते हैं वही उसको हम रिपोर्ट करते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन का तरीका जो होगा, हमारा डाटा कलेक्शन का जो तरीका होगा, रिव्यू लिटरेचर का जो ऑब्जर्व करने का तरीका होगा, वो ही हमारे आउटपुट में बाहर रिसर्च वर्क के रूप में मिलेगा। सो वी विल हैव टू कंसिडर all the systematic process and the searching of facts by observation. First of all, we have to be a keen observer. A keen observer will find unsolved problem around our society. तो हमारी सोसाइटी में कितनी प्रॉब्लम्स है, हमें उनमें से कौन सी प्रॉब्लम को ऑप्ट करना है। सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ रिसर्च में यही दे रखा है कि हम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं और वो प्रॉब्लम कौन सी है, हमें उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम सराउंडिंग इन द सोसाइटी। तो एनालिसिस जो होगा वो अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम को ढूंढ पाए, प्रॉब्लम ऐसी हो जो कि वास्तव में किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाए हम। ड्राइंग कंक्लूजन एंड मेकिंग जनरलाइजेशन, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस में हमें ऑब्जर्वेशन के बाद डाटा कलेक्शन करना होगा। देयर आर सेवरल स्टेप्स, क्योंकि पूरा मेथड हम डिस्कस करेंगे, वेरियस स्टेप आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे, तो वी विल फाइंड आउट कि देयर आर अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। हमें पूरे उस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को स्टडी करते हुए, वेरियस स्टेप्स को ऑप्ट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। Let us now move towards next. So it is research is an organized. अब डाटा को हम कलेक्ट करें लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए तो that would be not important for us. So research is an organized and systematic way of getting answer to the questions. Questions what? The problem for social change. Of course, as the society belongs to us, तो हमें किसी सोशल चेंज को या सोशल एस्पेक्ट्स को लेते हुए अपनी रिसर्च को बढ़ाना है और शुरू करना है। Now, why we are doing research? To increase the quality of life. Of course, we want to get a highest degree. Now, some utility of application. For application development, if you want to go ahead, you want to apply your knowledge to a, हम अपनी नॉलेज जो हमारे पास कंसीडर्ड करी गई है, अभी तक आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो यू गेन अ ह्यूज नॉलेज अमाउंट, आपके पास एक ह्यूज अमाउंट है नॉलेज का, because post graduation is the highest degree up to the college level, you can say. Then you are in the field of research where you are helping the society. तो हमें अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट को कंसीडर करते हुए, किसी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज में लेते हुए या हमारी बेसिक रिसर्च को काम में लेते हुए, हमारी क्यूरियस माइंड को रिलैक्स करने के लिए कि सोसाइटी में कितने ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, उसको देखते हुए रिसर्च के लिए शुरुआत करनी चाहिए कि व्हाई वी आर गोइंग। बट प्रॉब्लम स्टार्ट्स ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड कि हम क्यों डॉक्टरेट कर रहे हैं, हमें कहाँ स्टेबल होना है, रोटी कपड़ा मकान, इन सब के लिए एक सोर्स चाहिए, वो है हमारा इकोनॉमिक सोर्स। तो यू वांट दैट डॉक्टरेट डिग्री हम कर लें और फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाएं जो बीएड है, या फिर जो आदमी नेट पास है उसको डॉक्टरेट चाहिएगा आफ्टर फर्स्ट लेवल ऑफ प्रमोशन। हाउएवर व्हाट एंड वेयर यू गॉट, आई डोंट नो, इट डिपेंड्स अपॉन योर डेस्टिनी एज योर हार्ड वर्क डिसाइड्स एज वेल। तो हमें क्यों रिसर्च करनी है, ये तो हमारा अपना कंसेप्ट है ही। तो
हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटीज को बढ़ाना है, हमारे पास जो यूटिलिटी अवेलेबल है उनको हम अप्लाई कर पाए, इतनी हम में नॉलेज गेन है। जो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक बेसिक अप्लाइड रिसर्च सीखी है, हम उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसी की रिस्पेक्ट में हम डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहते हैं। तो हमारी क्यूरियोसिटी माइंड में जो बचपन से है उसको मरने ना दे, बिकॉज क्यूरियस माइंड विल ऑब्जर्व प्रॉपरली, and proper observation is the key to collect the right data, to logically approach these data and to provide the solution to these. तो हमें इन सब को सोचते हुए रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम चार्जिंग पोर्ट में है। So we have to continue that how we are starting our research method with the 6 questions which you have to carry out. हमें ये 6 क्वेश्चन जो है ऑनेस्टली अपने दिमाग में किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करने से पहले प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। हम क्या करना चाहते हैं वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए। हम क्यों करना चाहते हैं वो उसके बाद आना चाहिए, और हम कब करना चाहते हैं। टाइम टेन्योर इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज टाइम इज रनिंग। बच्चे रजिस्टर्ड हो जाते हैं 5 साल 7 साल, और यूजीसी ने गर्ल्स के लिए तो आप टेन्योर 10 साल कर दिया है। नो डाउट आई एम इन फेवर ऑफ द वुमेनहुड, बट 10 साल एक बहुत लंबा टेन्योर होता है। 10 साल का टेन्योर अगर आप व्हेन एंड हाउ वी आर डूइंग द थिंग्स, you are wasting your time if you are considering the rules and regulation. No doubt some hurdles come in your research path, but consider logically the things that time is the money and money is the time. You are doing the research to get degree of doctorate, to opt some higher grading of payment, or to get some promotion, or to help society. Parallelly run in your mind. So हमें इन 6 क्वेश्चन को जब भी हम शुरू करना चाह रहे हैं रिसर्च, टेक इन योर माइंड दैट चाहे वो गर्ल है, आई एम सॉरी टू से, बट आई हैव माय 3 गर्ल्स स्कॉलर्स, दोज among them did their PhD within, one scholar did in 5 years, but still after 7 years one of my scholars is struggling to complete her PhD because of lack of time. After marriage she got so many other hurdles in life, so UGC get regulations over them that a girl can do PhD within 10 years in now recently developed new education policy. But instead, it's my humble request to all my girl candidates. No doubt, boys are as well, considering the time, but they are far smart to do their works because they know the value of doctorate degree. They are going to grasp a good PhD degree within 3 to 5 years. So consider that tenure. However, the rules are to help you, not to linger on the task. Rules and regulations are made to develop our society, not to carry out our tensions and everything, because जिंदगी में टेंशन ना होगी ऐसा कभी नहीं होगा। So we have to carry out our research mode as well with a logical approach. Don't get excuses to make it that when we have to complete, even though only 200 working days are required to complete as per the ordinance of our university. Our university recommend that if 200 working day have been considered to be scholars, अगर हमारा स्कॉलर्स 200 दिवस तक अधिकतम कार्य कर पाता है तो डेफिनेटली डिग्री अवार्ड करने के लिए हम उसकी थीसिस सबमिशन की रिपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 200 वर्किंग डे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बच्चे हजारों दिनों में भी वो 200 दिन की प्रेजेंट नहीं दे पाते हैं। तो कंसीडर दैट कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कब कर रहा हूँ, और मैं कैसे कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, और किससे अपने डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई क्वेरी रेज करें, जैसे भी हम रिसर्च शुरू करें, तो हमें ये 6 ऑनेस्ट क्वेश्चंस अपने दिमाग में लेकर के चलना है। व्हाट, क्या कर रहा हूँ, वो तो हमारा पहला स्टेप ही होगा। क्यों कर रहा हूँ, मोटिवेशन बिहाइंड रिसर्च, लेकिन वेदर इट इज हेल्पफुल टू सोसाइटी, एज आई टोल्ड यू। व्हेन कर रहा हूं, मतलब कब कर पा रहा हूं, कब तक कर पा रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, वो हम आगे प्रोसेसिंग में देखेंगे। देयर आर सो मेनी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्रोसेसिंग व्हिच वी हैव टू ऑप्ट अगेन। सो एट रुडियार्ड किपलिंग सेड, मुझे भी उसकी बात अच्छी लगती है कि मुझे ये 6 चीजें हमेशा अपने दिमाग में साथ लेके चलनी है कि मैं
कहाँ, कैसे, कब तक को जरूर ध्यान रखिएगा. टेन्योर मस्ट बी देयर. So how do I conduct research starts from these 6 questions. But Michael Gray also commented over there, research is not a rocket science, but a process science. Let us discuss this. I don't mean to say the rocket science is very easy to consider. Rocket science is a complex science which needs accurate data, accurate corrections. Everything must be well measured. Everything should be well depicted. रॉकेट साइंस में हमें पता है कि पृथ्वी से दूर किसी एक कक्षा में स्पेस में हमें रॉकेट भेजना है, तो उसके लिए एवरीथिंग इज वेल मेजर्ड, वेल प्लान्ड, वेल प्री प्लान्ड. व्हाट डज इट मीन्स? माइकल ग्रे महोदय ने जो कहा है कि रिसर्च इज नॉट अ रॉकेट साइंस बट इट इज अ प्रोसेस साइंस. रॉकेट साइंस इज अ कॉम्प्लेक्स साइंस विच नीड्स everything is as far pre-planned. You have to count down from 10 to 1 before launching a rocket. But in case of research, whatever you planned, हमने जो प्लान किया है, हो सकता है हमारी मेथडोलॉजी में कुछ फेल्योर आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोसेस साइंस. कुछ ऑब्स्टिकल ऐसे आ जाए. रॉकेट साइंस जैसे कि प्री प्लान्ड मेथडोलॉजी को फॉलो करता है. रिसर्च is no doubt pre-planned. We have to pre-plan our all these steps before going ahead. हमें आगे बढ़ने से पहले, जैसा ये 6 क्वेश्चन बता रहे हैं, what you want to find out, लेकिन हम उसको प्री प्लानिंग में तो एक्सपेक्ट करेंगे ही, बट जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड रॉकेट साइंस बिकॉज उसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं. रिसर्च में यू हैव सम प्रोसेसेस, जहां कहीं भी आपको कहीं डाटा में, आउटपुट में, कि आपने जो इनपुट क्वेश्चन डाला, लेकिन जो आउटपुट आपने सोचा, जो हाइपोथेसिस आपने डेवलप किया, उससे अपोजिट भी रेस्पॉन्स मिल सकता है. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी उसके अपोजिट भी आ सकते हैं. तो हमें अपनी साइंस को प्रोसेस साइंस मान के वर्कआउट करना है, ना कि रॉकेट साइंस. जो हमने सोच लिया वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि साइंस बिलोंग्स टू कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग ऑफ डाटा, देन प्रूविंग योर डाटा विद द फैक्चुअल थिंग्स. अब ये फैक्चुअल थिंग्स एक्सपेरिमेंटल हो सकती है, तो वी हैव टू फाइंड आउट अवर डाटा. डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, उनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी. हो सकता है हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे हाइपोथेसिस से प्रॉपरली मैच ना कर पाए, तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं. इट इज अ प्रोसेस साइंस. यू थॉट दैट कि भाई हमारा ये प्रोसेस है, हमने ये सोचा है, व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट, दिस इज ओके. हाउ आर यू गोइंग टू रीच देम, इट इज मोर इम्पोर्टेंट. कि हमने क्या करना है. ये सोसाइटी के ऑब्जर्वेशन में एक अनसॉल्व प्रॉब्लम ली, उसको हमने कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए यूज करा, चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, चाहे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है. हमने एक मेथड ऑप्ट किया, उस मेथडोलॉजी को फॉलो किया, देन हाउ यू आर गोइंग टू रीच देम. उसके बाद हमें उस सेंस ऑफ कलेक्टेड डाटा को लॉजिकली एनालाइज करना होता है. अगर उसका कोई लॉजिकल रिजल्ट नहीं निकलता है तो हमारी रिसर्च फेलियर हो जाएगी. तो कंसीडर दैट हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट योर डाटा एक्सपेरिमेंटली. Experiments can be volumetric, experiments can be titrimetric, you can instrumental results can be there. So number of analysis has to be performed when you go ahead to consider your problem solving approach. So it's not a, I'm agree with Michael Gray that it's not a rocket science which is accurate, which is far measured, which have to be followed as per planned. And rocket science needs all that fundamentals to follow up. Therefore, he said it is a process science. During a process, our hypothesis can be in different manner, and our experimental opted observation results can give us some another data. Then we have to approach these collected data. हमें उन अप्रोच कलेक्टेड डाटा को ऐसे एनालाइज करना है कि हमारा लॉजिकल रिजल्ट जो हो, उन फैक्ट के ऊपर कैसे हम फैक्चुअल थिंग्स को
प्रॉपरली एनालाइज कर सकें। तो उसको एनालिसिस करने के लिए हमें फर्दर एक गोल डेवलप करना पड़ेगा। इट इज अ प्रोसेस साइंस। इन सम स्टेप्स वी हैव टू चेंज आवर प्रोसेस एज वेल, because rocket science cannot be changed once drafted, but process science can be changed. During the research process you can change the process as well. Say for example, I do consider this. Some people take that impact of e-learning. You know that e-learning is now a criteria after COVID-19. We are following, and of course you all people joined us in this e-learning portfolio where we are going to discuss in research course, and it is more feasible for everyone. We are saving the energy of ourselves as well as saving the energy and economical viability of university, yourselves, petrol, your considerations, because everything is saved. So e-learning processes and resources are nowadays very much famous in India as well. So there is an example for you to learn that it is not a rocket science but a process science. E-learning resources for students, one person consider this topic. It's a very small example, not like a thesis. तो उसने कुछ 20 लोगों का एग्जाम्पल उसने कंसिडर करने का सोचा, जिस भी एमएससी प्रोजेक्ट वर्क पे बच्चे ने अगर सोचा है तो इंटरव्यूइंग, of course you have to do a large work in your research. 10 girls and 10 boys he thought to collect data for that. This is his first questions, that impact of e-learning is on a student. I would like to collect that data, and he or she collected 10, thought that I would have to collect 10 girls and 10 boys, and age between school education, because the fundamental and basic knowledge gaining criteria. However, school or college you can find it out that e-learning is famous now. तो उसने मिक्स पार्टिसिपेंट्स का एज ग्रुप लिया, स्कूल एजुकेशन बॉयज और गर्ल्स के कंसिडरेशन में। सिनेरियो 1 में उसने क्या किया, ही वेंट फॉर इंटरव्यू द पीपल एंड ही फाइंड ओनली 10 बॉयज एंड 2 गर्ल्स देयर, जबकि उसका प्लान क्या था कि मुझे 50-50 लेना था कि 10 बॉयज 10 गर्ल्स आउट ऑफ 20 क्वेश्चनियर्स। तो उसने अपनी रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन में छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि डाटा कलेक्शन करना था उसको, लेकिन उसका डाटा प्रॉपर नहीं हो पाया उस पॉइंट ऑफ व्यू से जहां उसको जाना था। तो ही डिस्कस दैट हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द रिसर्च आउटकम्स, कि वेदर ई लर्निंग इज बेनिफिशियल, तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे। कि कुछ बच्चे ई लर्निंग में अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। अमंग यू पीपल आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली लिंक्ड टू द मेंटली। हम कितना जुड़ रहे हैं, हमें कोर्स वर्क पूरा करना है, नो डाउट, वी नो द थिंग्स, but at the level where you are a teacher or you are a researcher, you have to consider that e-learning is beneficial for us. In hybrid mode we have to go so many things in our life, because connecting people is mental. However, intellectual linking is done by mental connectivity. Okay, so you have to link yourself. If you are listening my voice, you are viewing my video, you are viewing this slide, I hope so you are gaining some knowledge in your mind. That is the benefit aspects, because without wasting our energy, without wasting the petrol of the India, because nowadays the petrol crisis, there are so many countries which are struggling to survive even for a food package. Gaza and Israel, everything is going on. So I think I am a supporter of that. I don't know how many of you, but it proves that about people joined us in online mode, and we are conducting this to save our energy, save our atmosphere, save our planet, and to save our time and energy. तो e-learning रिसोर्स पे पहले उसने मैंने बताया आपको कि रॉकेट साइंस और प्रोसेस साइंस में क्या फर्क है। तो रॉकेट साइंस में जैसा उसने सोचा होगा, तो उसने 10 गर्ल्स और 10 बॉयज के डाटा लेने थे, तो ही मे बी एडमेंट ऑफ दैट कि मैं ये डाटा कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन उसके टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाते, तो उसका काम नहीं बन पाता है ना। उसने 10 से 18 साल के या 12 से 18 साल के बच्चों का जो एस्पेक्ट लेना चाहा वो उसको नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो अपनी रिपोर्ट को तो एनालाइज करेगा ना। क्या है, वो नेग्लेक्ट कर देगा इन डाटा को, क्योंकि उसने उसमें टाइम वेस्ट किया, उसने अपनी एनर्जी वेस्ट की है। तो जो उसने सोचा था वो तो 10 बॉयज 10 गर्ल्स के लिए था, 12 से 18 साल की एज ग्रुप का था। हो सकता है वो एज ग्रुप भी मैच कर गया हो, लेकिन जो उसका क्राइटेरिया था उस स्कूल में जहां वो पहुंचा,
गर्ल्स का रजिस्ट्रेशन कम था, उस कंप्यूटर साइंस की फील्ड में गर्ल्स ने ऑप्ट कम किया, एंड ही ended with 10 boys and 2 girls providing data. In the second scenario, even all over age, उसने पूरा दूसरी स्कूल को सर्च किया तो उसने वो डाटा मिल गया. तो वी कैन कंसिडर बोथ द प्रोसेसेस इन आवर माइंड. तो इन फर्स्ट केस यू कैन नॉट रिजेक्ट द डाटा. हम उस डाटा को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें उसको अपनी टेबुलेटेड डाटा में कंसिडर करना चाहिए क्योंकि आपने अपने प्रोसेसिंग को किया है. सो आई मीन टू से that in a scientific scenario you may get some result which are not up to the hypothetical approach you have opted. हमने जिस हाइपोथेसिस को लेकर के काम शुरू करा, लेकिन हम उसको टोटल रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको भी अपने टेबुलेटेड डाटा कलेक्शन में शो करेंगे, एनालाइज करेंगे, क्योंकि किसी चीज का नहीं होना भी उतना ही मायने रखना है जितना कि किसी चीज का होना. क्योंकि समवन फ्रॉम योर रिसर्च स्टडी विल गेट दैट डाटा, इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने से ये रिजल्ट मिलेंगे, तो हम उसको आगे कंसीडर ना करें इन फ्यूचर. In that scenario, these results may also be helpful for some other researcher as well. Okay. So, in the proper processing of research, you can find that what was studied, what aspect the subject were studied, हम क्या करना चाहते हैं, उस स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है. ये प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च का पहला पॉइंट मेथड में आपको कंसीडर करना होगा कि हमें करना क्या है और उस क्या करने का महत्व क्या है. कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस ही आपको इंपॉर्टेंट बनाती है. ओके. सो हमारे काम करने का जो तरीका है उसको हमें कहाँ मेंशन करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं. तो हमें क्या करने से पहले हमें क्या देखना होगा कि क्या ये प्रॉब्लम किसी एस्पेक्ट से सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण है या साइंटिफिक लॉबी के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है. सो कंसीडर द सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी इन रेस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक फील्ड एज वेल एज इन सोसाइटी. ये पार्ट हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड में. यू कैन सी कि हम क्या कर रहे हैं वो रिसर्च में आता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में आता है, उसके जस्टिफिकेशन में आता है और इंट्रोडक्शन में आता है. तो हमें अपने काम को इंट्रोड्यूस करना है, उस रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करने होंगे. ये हमारा पहला स्टेप होगा. दैट विल बी द टफेस्ट टास्क. आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये पहला स्टेप जो होगा, अगर हम सही मायने में अपनी रिसर्च को शुरू करते वक्त ही उस पर गौर से ध्यान दे दें कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, तो हमारा काम जो होगा उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या होगा, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है. कि हम बेनिफिट दे पाएंगे सोसाइटी को, उसका महत्व क्या है, वो सबसे पहले जानना जरूरी होगा. उसी के द्वारा हम आगे अपनी अगली रिसर्च को हम ऑप्ट कर पाएंगे. तो इसको देखने के लिए हमें ये देखना होता है कि लिटरेचर रिव्यू के द्वारा हम देखते हैं कि क्या हमारा ऑप्ट किया हुआ टॉपिक पहले भी कई लोगों ने देखा है. यू आर कैरी फॉरवर्ड विद द थिंग्स. लिटरेचर रिव्यू आर इम्पोर्टेंट. तो हम प्रायर लोगों ने हमारे जैसे ही कुछ काम किया है या उसका किस तरह से हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे. व्हाट वाज डन एंड हाउ वाज द स्टडी कंडक्टेड. तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा मेथड एंड मेथडोलॉजी, प्रोसेस, कि हम जो मेथड ऑप्ट कर रहे हैं कई लोगों ने उसको ऑप्ट किया है तो उनके प्रोसेस क्या थे, मेजरमेंट डाटा क्या लिए थे, एनालिसिस रिपोर्ट क्या थी. ये सब हमारे जो क्वेश्चंस है व्हाट से रिलेवेंट होंगे अभी तक. देन व्हाट वाज फाउंड विल नाउ फाइनली गिव यू द logical approach to analyze your data. Logical approach to analyze your data. Then implication, conclusion, recommendation for future research. We will going to discuss in future. आने वाली स्लाइड्स में हम इसको और डीपली डिस्कस करेंगे. इट इज जस्ट अ सिनेरियो. टिल नाउ इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी, कि हमें टॉपिक डिसाइड करना है और उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वेशन को जारी रखते हुए अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है. So carrying out research needs some basic steps that we have to follow first. Identify the topic, issue, and then just a moment, someone came. I will have to take a hold of for 2 minutes.
Okay. So steps first belongs to identify the topic which you want to carry out, then design the appropriate methodology. हमें उसकी appropriate method और methodology में क्या फर्क है ये हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि we have to opt a methodology to collect our data. कि हम collect कैसे करेंगे? Then analyze these data. Ensure that you carry out your research in an ethical way. What are ethics? Ethics means ईमानदारी के साथ हम अपने डाटा कलेक्ट करें और उसको एनालाइज करें without any manipulations. Okay. Then to publish a research paper. Of course, carrying out research हम कर रहे हैं तो हमारा ultimate UGC regarding publication भी important है and a good impact factor. UGC listed journal and with either Scopus or Web of Science journal, you will listen about from various topics in future as well. तो ये जो कैरिंग आउट के बेसिक स्टेप्स है, बेसिकली अलग अलग किताबों में आपको 5 से 7 8 स्टेप मिलेंगे, तो इसमें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे क्योंकि मेथड एंड प्रोसेस बिलोंग्स टू वेरियस स्टेप. कोई भी मेथड होगा तो उसके कई प्रोसेसेस होंगे, उसके कई स्टेप होंगे, तो वी विल हैव टू कंसीडर दीज मेथड्स एंड प्रोसेस. बट बिफोर गोइंग, मेथड्स एंड मैथडोलॉजी में क्या डिफरेंट है? मेथड्स मीन्स द टेक्निक विच यू आर यूजिंग to analyze the data. Method means just a technique or the collecting data approach. कि हम उन डाटा को कैसे अपने कलेक्ट करते हैं. Like in arts, we can do questionnaires, interviews, but in science field, we have to carry out experiment, observations, and collect our experimental result as our data collection methods. But these are called methods. Methods means what? We have to collect our data only. So that is regarding the collection of data. While the methodology means the proper logical approach, a systematic solution of recommended set of methods. हमने डाटा कलेक्ट कर लिए, अब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, उनका ग्राफ कैसा बन रहा है, दैट इज कॉल्ड योर एनालिसिस. सो एनालिसिस जब आप उन कलेक्टेड डाटा का प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, लॉजिकल अप्रोच के साथ करते हो तो हम उनको कह पाते हैं मेथडोलॉजी. तो एक मेथड क्या है? मेथड तो एक लेमैन भी डाटा कलेक्ट कर सकता है. मैं किसी को बता के जा सकती हूँ कि आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करनी है. अब वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो भी होगा एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कर लेगा, वो डेली करेगा, दिन में 4 बार करेगा, 50 बार करेगा, जो मैं बोल के जाऊंगी वो कर लेगा स्टूडेंट. बट प्रॉपर टेबुलेशन ऑफ दैट डाटा will give you the proper option for the methodology. And then logical approach to analyze these data will give you a methodology. So before going ahead, केवल मेथड ऑप्ट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई मैं तो इस मेथड से कलेक्शन ऑफ डाटा करूंगा. That may be a volumetric, that may be an spectrometric data, that may be a collecting only viable qualitative data of air quality index, as I told you. So इतने में ही collection of data is just a method to opt your technique. हमने क्या किया, एक टेक्निक ऑप्ट करी है, चाहे मैं किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से काम करूंगी उस टेक्निक को. लाइक आई हैव टू रिमूव फ्लोराइड फ्रॉम वाटर, देन आई हैव टू चूज अ फ्लोराइड आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड. If I want to go ahead with a water pollution analysis, I will have to opt AAS or ICP-MS data. कि मुझे डाटा कलेक्शन की एक टेक्निक मिल गई. That is called my method. So difference between the method and methodology is that method will provide you only a rough collection of data, which may be in increasing, decreasing, in a sigmoid curve, or in any kind of matter. That depends upon the analysis. While the methodology considered the proper justification of collected data and your recommendation after analysis of these data. So clear about your considerations कि हम अपने माइंड में पहले से मेकअप करें कि हमने कौन से मेथड से डाटा कलेक्ट करना है और उस कलेक्टेड डाटा का टेबुलेशन एक फॉर्म में करते हुए उन डाटा को
किस मेथडोलॉजी से एनालाइज करना है. दैट कैन बी ए स्टैटिस्टिक अप्रोच, दैट कैन बी experimental approach, that can be a formula based approach, that can be any kind of formula based approach like adsorption removal or any kind of data, but you have to report your collected data in a logical array to conclude over the result. बिकॉज केवल 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 आपने डायरी भर दी, डाटा कलेक्ट कर दिए, लेकिन उनका प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाए, उनका एक लॉजिकल वे में रिजल्ट आउटपुट में कंपेयर करके नहीं दे पाए, तो रिसर्च विल नॉट बी कंप्लीटेड. सो रिसर्च इज नॉट ओनली कलेक्टिंग अ डाटा, इट कैन बी डन बाय एनी पर्सन बट नॉट अ रिसर्चर. A researcher would collect the data, tabulate in proper manner, arrange them in a best manner as per his or her knowledge view, and then analyze these data in a conclusion manner to report. Because representation is your report. You have to conclude your results, compare with others. What you did तरीके से किया है, वो दूसरों की तुलना में मैंने कितने तरीकों से किया और कैसे किया और उसको किस तरह से मैंने प्रूव किया. So methodology and the methods, these are different things. Research methods are just rough data collection, जो कि आपको डेली करना है काम, उसको हमें किस तरह से डेली कलेक्शन में इन्वॉल्व होना है, मेथड्स वो बताते हैं. Again, there is a slide over. Research methodology is a systematic way to solve that problem. जिस प्रॉब्लम को आपने हाईलाइट किया है, क्या मुझे करना है, उसको हम कैसे करेंगे. So it is a science of studying how research has to be carried out. Methodology में आपको पूरा बताना है. Essentially the procedures by which researchers go about their work of describing, explaining, प्रिडिक्टिंग फिनोमिना, ये सब हमें रिसर्च मैथडोलॉजी को ऑप्ट करते हुए करना है. एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मेथड्स बाय विच नॉलेज इज गेन. तो हमने कौन सी टेक्निक से डाटा किया है, वो आपको टेक्नोलॉजी उसमें डिस्क्राइब करते हुए अपने एनालिसिस को रिजल्ट तक ले जाना है. जबकि रिसर्च मेथड में आप किसी भी प्रोसीजर को, स्कीम को, एल्गोरिदम को, स्टैटिस्टिक्स को, कलेक्टिंग डाटा को सिर्फ डाटा कलेक्शन के लिए यूज करते हो. तो आई होप मेथड एंड methodology is clear to you. There is a difference in methods. Method are just a layman type collection of data, by which technique you are collecting your data in either manner, increasing, decreasing, you don't know, you are just collecting your data. Okay, so they are not resulting in output. You will have to find out an output regarding your collected data. That is called a research methodology. So consider methodology rather than only methods. जब भी हम किसी मेथड को ऑप्ट करें तो ये देखें कि उसका हम किस तरीके से फिर एनालाइज कर पाएंगे और कैसे अपने रिजल्ट्स को जस्टिफाई कर पाएंगे, वो मेथडोलॉजी हम ऑप्ट करें और उसी के तौर पे हम आगे बढ़ें. तभी आपको आगे कंसिडरेशन में हेल्प मिलेगी. बिकॉज पहला स्टेप टफ है एज आई टोल्ड यू, लेकिन उसके बाद जब आप एक लय में काम करना शुरू कर देते हो तो यू कैन ऑप्ट दैट. अब चूजिंग यूजर फ्रेंडली रिसर्च मेथड मीन्स, अब ये है फीजिबिलिटी होनी चाहिए, हमें उसकी फीजिबिलिटी देखनी होगी. मेथड्स आर जस्ट टू कलेक्ट डाटा, लेकिन आप डाटा कलेक्ट कहाँ से करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है. अब मुझे वाटर एनालिसिस करना है और मेरे पास फंडिंग, एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर स्लाइड्स, आपके पास क्या रिसर्च प्रोजेक्ट फंडिंग है. मुझे डाटा कलेक्ट करना था, मैंने स्टडी में लिख दिया कि my topic is that I would like to know that whole Rajasthan is suffering from heavy fluoride contaminants, heavy uranium contaminants. So why you are going to do that? That which area you are going? Feasible data collect कर पाओगे या नहीं, है ना, कि पूरा राजस्थान कवर कर पाओगे आप. तो इट इज नॉट द वे कि मैं पूरा राजस्थान कवर कब कर पाऊंगा, जब मेरे पास उसके लिए फंडिंग होगी. मैं रह तो रहा हूँ कोटा में, मैं रह रहा हूँ जयपुर में, और मैं बात कर रहा हूँ फुल राजस्थान के सिनेरियो की. तो डीलिमिट योर डाटा एज वेल. डीलिमिटिंग इज बेटर टू मेक योर feasible sources of data. Feasible means
उस डाटा के कलेक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है, या पूरे भारत का ही फ्लोराइड कर दिया ले हमने तो ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं बड़ा एस्पेक्ट लेके चलूं। एस्पेक्ट चाहे छोटा हो लेकिन आपकी फिजिबिलिटी में हो, आपकी कवरेज क्षेत्र में हो। हम आपको कहते हैं कि हमारी फिजिबिलिटी में मैनेजमेंट होना चाहिए उस चीज का। तो इट मे बी अप टू अ लोकलाइट्स कि मैं केवल कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, जहां तक मेरी एक फिजिबिलिटी अप्रोच है, मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस एरिया तक का फिजिबल वे कर सकता हूं। उसकी वेल बींग, आपकी एबिलिटी क्या है, आपके पास क्या फंडिंग सोर्स है। नो डाउट इफ यू हैव अ गुड फंडिंग सोर्स रिगार्डिंग एनी फेलो or a project, you can opt that as well. I am not delimiting in that manner. Delimiting your concept as per your availability of resources. So check your resources before starting your topics. प्रॉब्लम फाइंड कर आउट कर दी, लेकिन हमारे पास उसका रिसोर्स नहीं है कि मैं डाटा कलेक्ट कैसे करूंगा। मेरे पास फ्लोराइड आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड नहीं है और मैं कहती हूँ कि मुझे फ्लोराइड डिटेक्शन करना है, वेदर इट इज अ फीजिबल थिंग टू मी। सबसे पहले तो उसका इंस्ट्रूमेंट चेक करूंगी कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ओके, so carry out that feasibility in your department, in your locality. No doubt each and every department is not having a good resource of instrumental analysis, so we have to carry out, but daily analysis जिस चीज चाहिए वो चीज तो हमारे पास होनी ही चाहिए। So consider that methodology I told you, because proper analysis is more important rather than only collection. Collection of data तो 500 कर लिए हमने, पर अब उन 500 सैंपल का कलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे उन 500 सैंपल का। To publish a paper, you need an concluding remarks with a comparative analysis of your data with other researchers. This is called research. You are searching the work done earlier from other people. दूसरे रिसर्चर्स, दूसरे साइंटिस्ट ने जो काम किया है, हम उसी के आधार पर रिसर्च कर रहे हैं कि पिछले डेकेड में इतना फ्लोराइड था तो इस डेकेड में कितना था। यू कैन पॉइंट आउट दैट एज वेल कि डेकेड मींस एक दशक की स्थिति में देख रही हूँ कि पिछले 10 सालों में कैसा था सिनेरियो, 20 से 30 वाला अब मैं देखूंगी और उससे पहले 10 से 20 का सिनेरियो क्या था। क्या हमारी देश ने उत्तरोत्तर प्रगति करी किसी भी क्षेत्र में, ये हो सकता है किसी भी एनालिटिक डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में हो सकता है ना, कि अगले 10-10 सालों के तौर पे भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। क्या उसकी अवेलेबिलिटी, फिजिबिलिटी होगी, और मेरी एबिलिटी भी होनी चाहिए, मेरी लायबिलिटी भी होनी चाहिए कि मैं खुद उस एबिलिटी के साथ अपने आप को जस्टिफाई कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं। सो देयर आर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मैथडोलॉजी एज पर योर टाइप ऑफ रिसर्च। In arts, you can see there are historical correlation, comparative study. Even though in science we can do comparative analysis and experimental, of course, then evaluation. तो कई तरह के एनालिसिस को हमें ऑप्ट करना होगा जब हम अपनी रिसर्च मैथडोलॉजी को चूज करेंगे। तो कई थीसिस को आप देखोगे, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ समथिंग लाइक, जो भी आपको चेकआउट करना है, या pollution due to fluoride in the Kota, Bara, Bundi, Jhalawad region. So you have delimit your regional areas. So in the regional aspect, you have to check your availability, you have to check your feasibility, your well-being, that I am travel acquainted. कि अगर मुझे डाटा कलेक्ट करना है तो सैंपल लेने होंगे, तो क्या मैं ट्रैवल फियर तो नहीं रखती हूँ, तो मैं क्या कर पाऊंगी, क्या मेरे पास इतना रिसर्च फेलोशिप से फंडिंग है कि मैं इन स्पेसेस की जर्नी कर पाऊंगी। अगर ये नहीं है तो मैं और डीलिमिट करूंगी अपने रिसर्च को, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ छोड़ के केवल कोटा की लोकेलिटी पे आ जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतनी फंडिंग नहीं है कि मैं 4 जगह भी घूम के 4 सालों में 500 सैंपल कलेक्ट कर पाऊं। देन आई विल हैव टू डीलिमिट दैट। तो इन दैट रेस्पेक्ट आपको फिर अंडरग्राउंड वाटर लेना पड़ेगा, रिवर वाटर लेना पड़ेगा, या आपको सरफेस वाटर लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू चेक आउट दैट द
मैम आवाज नहीं आ रही है। Hello, am I audible? यस मैम। Yes, ma'am. I thought for 2 minutes I lost the connectivity. Yes, ma'am. The major problem regarding this hybrid mode, which I am appreciating earlier, is this. But the patience is the key to survival. You know, the patience is required in every aspect of life. And I'm thankful to you all that you have shown you are patientful. Anyways, so within 2 minutes, I have connected back. And thanks to you for being patientful listener. So I mean to say, check your resources, your own capabilities, abilities before starting your job, before starting your research work. How do I know? Ask your supervisor or others who have worked earlier in your field. I don't know whatever field you want to choose, but whatsoever your interest, so just identify. बिकॉज हमें अपनी खुद की इंटरेस्ट को भी पता लगाना बहुत टफ होता है. कई बार हम खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई मैं क्या, जो रिसर्च सुपरवाइजर कह देगा वो कर लूंगा, है ना. तो जो कर लूंगा वो आपके लिए क्या होगा, एक बर्डन होगा, एक स्थिति होगी. जो सुपरवाइजर ने डिसाइड कर दिया वो होगा. बट डिस्कस योर आइडियाज फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज, योर इंटरेस्ट. बिकॉज मैथड ऑफ रिसर्च स्टार्ट विद व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाई यू वांट टू डू. क्या करना चाहती हूं और क्यों करना चाहती हूं. सो यू हैव टू सर्च, रिव्यू लिटरेचर फर्स्ट. तो हमें अपने रिव्यूअर्स को देखना होगा, हमने सुपरवाइजर से डिस्कस करना होगा कि who have worked earlier directly or indirectly on the application domain you have chosen. That can be any ग्रीन केमिस्ट्री फील्ड हो सकती है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हो सकता है, सोलर एनर्जी हो सकती है, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो भी है. You will have to choose according to your field of interest. You can have different approach in that field as well. Look at the significant papers first. जो मैं करना चाहता हूं उस पे earlier researchers with a good impact factor journal, of course. जो स्टार्टिंग हम करेंगे अगर वहीं से अपन साइंस जर्नल्स, एल्सवियर उसी से शुरू करेंगे, स्प्रिंगर नेचर, जो भी आप कर सकते हो, उस पेपर से हम शुरू करें कि उसने जैसा सोचा किया, क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ. तो अपनी फिजिबिलिटी, अपने रिसोर्स, अपनी कैपेबिलिटीज को हमें ध्यान रखते हुए अपना व्हाट वी आर गोइंग टू डू सेलेक्ट करना है. ओके. So now coming for the different steps, method and methodology, you got differentiations. क्या हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी चीज को जो पहले से फैक्ट डिसाइडेड है, या अपने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को कलेक्ट करके प्रूव करना चाहते हैं किसी रिजल्ट को. यस, एनीवन अनम्यूटेड बाय मिस्टेकन और सम प्रॉब्लम. लॉक कर दिया क्या, मेरी चाबी ले ली. Yes, Divya, you have unmuted yourself. Do you have any query regarding? Okay. So in the field of scientific research, what we have to think? We have to investigate our technique, our experimentation to discover or interpret the fact. It may be a new discovery because innovation and discoveries are happening, you know. So you have to choose yourself whether you are just collecting the data, on which basis you are collecting the data, interpretation and analysis of data, how you are going to revise your aspects and theories in case if you didn't find the result up to the mark. Of course, in scientific field, at least 3 concordant reading are always required, you know. In a simple experiment starting from 11th standard, we have to make concordant readings. 3 एक जैसी रीडिंग में से 2 एक जैसी मिलना ही हमारे reproducibility of the data,
repeatability of your data, regeneration of your data is showing the fact are fact. Otherwise, what is fact? Whatsoever is fact is, well proved. Fact is what? Which is proved with the help of some experimental aspects. We have to prove our identified data. हमने जो डाटा निकाला है उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू हमें किसी थ्योरी को सपोर्ट करते हुए या किसी लॉ पे फिट करते हुए अपने रिजल्ट को एनालाइज करते हुए अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है, वही साइंटिफिक रिसर्च होगी. तो इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली with the help of experimental facts, collect your data, logically tabulate that, and then revise your work to publish a reputed journal, in a reputed journal. तो बिना रिवीजन के एक्सेप्टेड थ्योरीज पे आप वर्क नहीं कर पाते हो. दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड. बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू नो दैट. ओके, तो हमें क्या करना है, हमारे रिजल्ट की रिप्रोड्यूसिबिलिटी चेक करनी है. रीजनरेटिव डाटा क्या हम ला सकते हैं, क्या सेम और अप टू द मार्क कैन यू रिप्रेजेंट योर डाटा इन अ रिप्रेजेंटेड मैनर, इन अ रिप्रोड्यूसिबल मैनर और इन अ रीजनरेटिव मैनर. Means the same experiment under a set of identical conditions should give you almost same result. That is called reproducibility. And reproducibility and regeneration of data is, proving that you are going in right direction. तो हमें सही दिशा में जाना है. इसके लिए अपने रिजल्ट को एटलीस्ट 3 times चेक करते रहना चाहिए. As I told, scientific method start in various steps. You have to consider these steps in proper manner. First one is observation. Observation is key. Observation सबसे अच्छी चीज होती है कि हम अपने चारों तरफ कोई प्रॉब्लम ही ना दिखे, because you are not a keen observer. So how would you able to start your research? हमें तो पता ही नहीं क्या करना. जो सुपरवाइजर कह दे मेरी फील्ड ऑफ रिसर्च भैया वाटर पॉल्यूशन है, उस पर ढूंढ कुछ नहीं. फाइंड आउट योर ओन इंटरेस्ट. नहीं मैडम मुझे सोलर एनर्जी पे वर्क करना है, तो कैन यू हैव सम इंटरेस्ट ओवर देयर? ऑफ कोर्स योर इंटरेस्ट वुड बी द की टू ऑब्जर्व. क्योंकि हमें नहीं पता आपकी कैपेबिलिटी कहाँ है. अ गाइड वुड नॉट बी एबल टू डिसाइड. यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन स्ट्रेंथ. यू नो योर सेल्फ, नो वन एल्स अदर देन गॉड. सो आई मीन टू से हमें अपने में क्या स्किल है उसको पहचानते हुए अपनी ऑब्जर्वेशन को राइट डायरेक्शन में यूज करना है. नो डाउट अ गाइड इज हेयर, अ सुपरवाइजर इज हेयर टू शो यू द राइट पाथ कि हाँ तुम सही दिशा में सही जगह पे सही डाटा कलेक्शन के लिए जा रहे हो. उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे. लेकिन हमें नहीं पता है, हम आपकी स्किल्स टेस्ट करेंगे या फिर हम अपना आगे वाला ये जो टाइम है आपका, जो आप कोर्स वर्क कर रहे हो, इन 5 महीनों में आपने सुपरवाइजर से कितना कांटेक्ट किया है, कितने टच में रहे हो, वहीं से आपकी प्रॉब्लम डिसाइड होगी. कैसे आप सिनॉप्सिस बनाओगे. द फर्स्ट स्टेप इज सिनॉप्सिस फॉर्मिंग. तो उसके लिए आपको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा. एक हाइपोथेसिस डेवलप करनी पड़ेगी. एक अभिधारणा, एक अभिकल्पना बनानी पड़ेगी कि मैं इस फील्ड में काम कर सकता हूँ. ग्रीन केमिस्ट्री ऑप्ट करता हूँ, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड पे काम करना चाहता हूँ, आयोनिक लिक्विड्स पे काम करना चाहता हूँ, वाटर पॉल्यूशन पे काम करना चाहता हूँ, नेचुरल क्लेस पे काम करना चाहती हूँ, या पॉलीमर साइंस में अपनी फील्ड मेरी डेवलप करना चाहती हूँ, या हाइड्रोजन एनर्जी जनरेशन पे काम करना चाहती हूँ, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट पे, ड्रग डिलीवरी पे काम करना चाहता हूँ. आई हैव माई कीन कमांड ऑन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. आई हैव माई एक्सपर्टाइज in running my work with a proper calibration and everything. तो ये आपकी अपनी skills पे depend करेगा, because you are the person who are going to observe, to collect the data. Because if you observe in wrong manner, you will get the wrong data. Observation is the key to success. अगर हमें यही नहीं पता है lower meniscus of the colorless liquid is giving you the right thing, then you will not be able to get the right data. You are using iodine liquid, but you don't know how to read the data, because in iodine solution is a colored solution
and you are seeing the lower meniscus while you are reading. So whether you think that you are collecting a right data, when the data collection is wrong, your observation is wrong, you would be in a wrong direction. तो हमें अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को कंसिडर करते हुए अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सुपरवाइजर से डिस्कस करना चाहिए, अपनी स्किल्स अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सोलर एनर्जी है, वाटर पॉल्यूशन है, ग्रीन केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है, या काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म स्टडी पे है, मैं बहुत फ्लुएंटली काम कर सकती हूँ, तो मैं उस पर डिपेंड करूंगी. ओके, so identify your role in your thesis, because your role, you are the hero or heroine of your thesis. You are going to collect your data. No doubt I am the director only, but of course director can direct, but you know, the good hero and heroine can make it fame. एक अच्छा हीरो हीरोइन अभ्यास करेगा तभी तो वो अच्छा बनेगा. तो आपको अपने अभ्यास के स्तर को बढ़ाना, अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स के अकॉर्डिंगली अपना टॉपिक चूज करना है. No doubt, supervisor is here to help you as a director. You will have to find out the ways with the help of the torch given by him or her. But of course, your own capabilities and the caliber is the key to success. Because if you don't have keen interest to observe the things, you won't be able to collect data. As I told, people will take 7 to 10 years. So whether you are wasting so many years of your life, whatsoever you are doing, प्लान योर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली. हमें अपने टाइम मैनेजमेंट को निर्धारित करते हुए काम करना चाहिए कि ठीक है 2 से 5 साल, 5 साल एनफ होते हैं, अब उसके बाद जो भी हो रहा है नॉट इन माई हैंड. तो ऐसा करते हुए अपने को छोड़ देना बिल्कुल सही चीज नहीं है. अपने लक्ष्य या गोल की तरफ हम बढ़े तो एक टाइम मैनेजमेंट के साथ बढ़े कि कैसे भी करके हम अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे, प्रॉपर मैनर में करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, विदाउट मैनिपुलेशन करेंगे, रिप्रोड्यूसिबल मैनर में करेंगे, रिपीटेबिलिटी रखेंगे. बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट योर कैपेबिलिटीज बिफोर स्टार्टिंग अ मेथड. ओके, मेकिंग एन हाइपोथेसिस मीन्स you have to identify that your collected data may fit in this conclusion. That is your hypothesis, because it's a big field of discuss. Framing a hypothesis is another topic, which is, I think, going to be discussed in another way. How you have to formulate your hypothesis. कि मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ के क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उनमें या तो ब्राउन टीथ है या बोन्स डिफॉर्मेटेड है. दैट मीन्स द considering of that, the fluoride concentration in water is very much high, but we are not observing that. However, the fluoride is useful up to 1 ppm in our body, but more than that can, you know, make your yellowing of teeth, deformation of your bones, ऊबर निकल आता है, बोन्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है. There may be another factors, but you are observing the people's surroundings. Once we visited Dungarja village in our university purpose, university have adopted some villages and we have to routinely check up their things. So we observe that. That's why one of my researchers is working over on the fluoride removal technique from water, because I have seen, my scholar is upcoming with that some people are, even in the standard of school level, they are drinking, you know, some common water resources which are groundwater resources of local localities, and the students are having, those who are not, you know, chewing supari itself, but the people are suffering from yellowing of their teeth. I have seen. It's my observation, and I thought in that mind, in the year of, you know, 2018, I saw that person. तो मुझे लगा यार नहीं, यहाँ पे फ्लोराइड होना चाहिए पानी में, मुझे चेक करना चाहिए. तो ये मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व किया ना कि प्रॉब्लम रिगार्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड वाटर इज देयर इन सिनेरियो, एंड आई रिव्यू द आर्टिकल्स. देन आई मेक हाइपोथेसिस दैट वी कैन गो अहेड विद द टेस्टिंग ऑफ दिस विद द फ्लोराइड सेंसिटिव आयन इलेक्ट्रोड. Fortunately, we have in our university fluoride ion sensitive electrode. That's why I plan accordingly. If we can do that, we can collect some about 200 or 500 water samples, which can carried out. So you will have to find out. A proper observation is not only necessary to carry out the research. I have correlated it with the availability of the fluoride sensitive electrode as well. So whatsoever problem you are selecting,
check your resources, check your capability. As I told you earlier, before going ahead, because meanwhile आपने 2-3 साल सैंपल कलेक्ट करने में लगा दिए और तब हमें पता लगा कि it's not possible, it's not easy to detect fluoride without the use of an iron sensitive electrode. अब हम क्या करेंगे? Because as I told you, research is not rocket science. You have collected water samples. You have 500, 200 samples with you. No doubt, our fluoride sensitive electrode got, due to some problem, it not working. And it will take about 6 months to 1 year to get it calibrated again to make it, feasible to work over. तो क्या मैं उन 500-200 सैंपल को बर्बाद मान लूं? नहीं. You have to think the resources near about. You have to think the availability of the resources, because these water sample can have something which may be useful for you, preliminary data, something which you want. So in a rocket science, I decided to declare that I would have to check the fluoride concentration in the given water sample. If I go in a rocket science manner, I would be adamant to do that. But in a research process, I know water may contain another feasible things which I can analyze, because I have wasted my energy to collect 200 to 500 samples of near about locality. So now this becomes a process science. I hope you understand. In process science, we can change the parameter meanwhile because we have wasted our energy to collect that sample. However, it is wrong but unfortunately, due to unavailability of the resources, which is a fluoride sensitive electrode in my case, I lost it working. कैसा भी हुआ, मेरे पास फंड नहीं है कि मैं अब उसको 5 लाख रुपए खरीद सकूं. Obviously, funding is the criteria to adjust that instrument or the analysis technique to me. Then I will have to analyze and report preliminary analysis like TDS, BOD, COD, dissolve oxygen, which we can have. Even you can analyze, however, your result will be somewhat up to the less than 1 impact factor journal, because a good impact factor journal needs a good quality data analysis. So consider first the resources as well, how you are going to collect your data, how would you have to present your data. That's why I told you method are the primary collection data sources, but the methodology is the whole backbone of your research. Be sure about the resources available around yourselves, make your hypothesis, analyze your sample, testing may be done, then the prediction can be done in the way that how you rearrange your data, how you have to represent your data. That is your methodology. So in a scientific method, you have to observe first, make a hypothesis, test your hypothesis by the available methodologies which you have opted, like in my case, either a fluoride sensitive electrode, or you can go with a UV spectrophotometric analysis with a ligand forming capacity. There are so many methods. You have to opt. You can choose volumetric, titrimetric, ion sensitive electrode, or any kind of methodology to detect chloride, fluoride, bromide, anything else which you want to do. But consider these methodology and test your result to match your hypothesis. I thought that there may be a high concentration of the fluoride. Because of that, the yellowing of teeth or the deformation of bones were observed in the locality of the Barabundi or Kota where I went. So regarding your result, whether you got that hypothesis working in your case, it may be or it may not be, because whatsoever you have collected the sample from some hand pumps, some groundwater sources, that can be a well, that can be a river, that can be a hand pump. So you have collected your data in various manner and find it out what you are going to do. Test your analysis. As per my hypothesis, there must be high fluoride content. However, among only 200 samples which I have collected, I find only 20 samples which are found above the limit ppm of 1 ppm fluoride concentration in that case. But however,
10%, 200 about samples are taken, and among that 20 are found higher in ppm, which are not recommended by WHO or BSO standard or ISOs. So we have to follow some technologies. We have to opt the result analysis, and then we have to find it out. So considering these, we have to test our analysis first, and then accordingly, we have to check our result and report our predictions. If your hypothesis is not true, your testing is not true, you can find this arrow here, test again your hypothesis. Or testing results are false, you will have to repeat your sample collection in many cases. In your case, it may be the depth of water. कि आपने डेप्थ वाटर सैंपल की 15 सेंटीमीटर के अंदर की तरफ ली, हो सकता है कि वो 15 सेंटीमीटर के बाद ज्यादा सैंपल कनेक्ट कर रहा हो. तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि how you are collecting your sample. In some cases, if you don't get your result according to your hypothesis, you may collect more samples. You can go ahead with the another sampling for some opting. कुछ हिस्से तक हमें अलग से सैंपलिंग दोबारा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन जैसा मैंने बताया इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस की जो कर दिया वो फाइनल है. तो हमें अपने चारों तरफ से क्वेश्चंस लेने हैं, उसके अकॉर्डिंगली डाटा कलेक्शन करना है, अपनी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटल पे प्रूव करना है, और उसके अकॉर्डिंगली ही अपने रिजल्ट एनालिसिस करने होंगे. सो ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ टाइम, अ टाइमर इज शोन हियर. Don't forget your time management. In various steps, you can find here that a real world phenomena around you. So question about in the big picture. I told you that you cannot perform a real world phenomena up to the level of even in India or even in up to Rajasthan because of the feasibility and the ability of the task you are going to perform. You have to delimit your data. You have to recognize your strength, either a funding strength or your physical strength or your motivation to go ahead with the areas where you want to develop the research. So आपको अपनी रिसर्च के लिए जो क्वेश्चन आप फ्रेम कर रहे हो, क्या वो मेरी रियल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली है? तो हमारे कंसेप्ट को लिटरेचर रिव्यू से टैली करते हुए, अपने हाइपोथेटिकल प्रेडिक्शंस को ऑप्ट करते हुए, पहले टेन्योर में in a half dumbbell of this dumbbell time scale, you will have to identify your strength. कि हमारे चारों तरफ की जिस प्रॉब्लम को मैं लेने जा रहा हूं या जा रही हूं, वो क्वेश्चन जो मैं रेज कर रही हूं, क्या वो feasible रहेगा, either at the funding resource or at the strength of my practicals or at the skills or at the availability of the resources at my institution or nearby localities. Of course, we have to take a look over our nearby localities. In our case, when I thought my project may work, atomic absorption spectrophotometer was needed to analyze the mercury in the water sample. But unfortunately, because the project work is tenure bounded, in a tenure bounded work, we want the result within the 3 months. But unfortunately, when the instrument is stuck over, I will have to find out other resources. So I find out in near localities, availability of the lab which can perform. However, a scholar has to run some funding approach because it is a funded project. So it becomes easy for me to acquire some other source within the time limit. तो हमने AAS की जो रिपेयरिंग थी उसके अगर ऊपर ध्यान देती तो 6 महीने बीत जाते. Until February I have to report my result. Then how could it be possible? However, in started, I have my AAS in working in my hand. But instrument है, कभी भी stuck हो सकता है. We have to get it repaired. तो उसको repairing करने में 3 महीने लग जाएंगे. और it is a month of December. In the month of December, when I have to collect my data, as such, if you are collecting the rainwater samples, or in a rainy season, what would be the impact of fluoride in the groundwater? Because in the rains, when the rainfall occurs, the water get diluted. The rainfall can, increase the water levels. So in that case, you have to collect the sample as well and analyze in the timely manner. तो अब यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था. तो अपने चारों तरफ के रिसोर्सेज को भी हम ऑप्ट करें कि हमारे चारों तरफ के रिसोर्सेज में क्या ऑप्शनल हो सकता है कि अगर इन केस
I will stuck over with my instrument, whether I have a nearby locality who can support me in future for in case if I got stuck over with my instrumental facilities at my center. So try to collaborate, try to make a group with people, because working in group will give you more benefit than giving individual strength. है ना? तो हमें चारों तरफ ये देखते हुए भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या मेरा स्टक होने पे मेरा डाटा कलेक्शन हर्डल हो जाएगा, तो मैं उस केस में अपने एनालिसिस सैंपल को किसी नियर बाय रिसोर्स सेंटर्स पे अवेलेबल वर्कआउट कर सकती हूँ. तो वी हैव टू चेक. सो बिफोर सेलेक्टिंग योर टॉपिक, consider all resources, not only on your institutions but in nearby peer group of your researchers in other university as well or other colleges as well. It will boost up their work as well as your work, and the companionship will enhance the motivation of each other. So we can do that. But in India, I'm sorry to say, people are hiding their work and people are not interested to make a collaborative approach. However, in foreign, it's a real collaborative work, which people are open-mindedly sharing their data with each other and concluding remarks will be done. So test your hypothesis, try to make discussions with the real persons, then collect your data, prepare them in a tabulated way. You can go for result analysis, either in statistical analysis, test your hypothesis. If there are some errors, find out that, do discussions with your supervisor and colleagues in research groups, generalize your output. That will make your time frame. You can do that in a proper time management way. So here again, there are steps in the research process. Start your bulb in mind. First of all, define the problem. You will have to define the problem first. Then review the literature. Of course, literature review, you are going through with that. I hope so many of you have learned new things when you starting your research. So reviewing the literature in the field where you are working, so many other researchers have worked over. So start, then review that whether the same kind of thinking you thought has already been taken over, in which manner and which methodology the people have opted, either in an instrumental way, which you don't have, then either in a volumetric or titrimetric array, or in a spectrophotometric array. You can choose the literature review in a manner with selecting a good journal with a good impact factor way, and selecting at least UGCKL listed journals, and as well as Scopus or elsewhere, or nowadays, Collaborate Analysis is the most famous journal list which you will have to find out. So in that way, you can review the literature by citing over various articles of interest of your field where you want to work. तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम किस मेथड को ऑप्ट कर रहे हैं. हमने जिस मेथड को ऑप्ट किया है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका और रिसर्चर्स ने किस मेथड से ऑप्ट किया था, कैसे वर्कआउट किया, कैसे एनालिसिस किया, और कैसे अपने डाटा को रिप्रेजेंट किया. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, if your problem is right, you got the right way in a right manner, and around the literature survey you will find out as per your resource availability. As I told you, check out the resource availability first before going ahead, because meanwhile when you stuck over, no one would be helping for you other than you, or you will have to choose the nearby localities. So consider nearby locality of groups which are working. Try to collaborate, don't hesitate, because mistakes are made by man. हम हैं ही गलती करने के लिए, गलती हमसे होती है, तो डोंट हेजिटेट. तो क्योंकि काम जो करता है उससे गलती होती है, जो काम नहीं करेगा, जो कॉपी पेस्ट करेगा, वो कॉपी पेस्ट डाटा करके ऊपर नीचे करके कर लेगा, बट इट इज नॉट अ रियल रिसर्च एथिक. एज आई टोल्ड यू, ethics must be followed while you are working in every task of life, not only for the research purpose, because our life is genuine in a way that we are ideal for some other.
कुछ बच्चे हैं आपके आजू बाजू, आपके भाई बहन है, वो आपको देख के आपसे सीख रहे हैं, चाहे आपका भतीजा है, भाई है, बहन है। लेकिन जैसा हम ऑप्ट करेंगे वो हमें देख के ही तो सीखेगा। हमारे स्टूडेंट है इन माई केस, इफ आई टोल्ड देम नहीं यू जस्ट हैव टू मैनिपुलेट, नहीं यार ये रिजल्ट तेरे ठीक नहीं, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके, तो आई एम नॉट एग्रीइंग फॉर दैट। आइदर यू हैव मेड सम मिस्टेक, आपको 2 बार करना पड़ेगा काम, 3 बार करना पड़ेगा। अ हार्ड वर्कर विल विन द रेस, नो डाउट, बट स्मार्ट वर्कर will have to nowadays. So being a hard worker also you have to be very smart worker. So being very smart, you will have to check the review. So start your working with a review literature first. While reviewing literature, you will collect more than 200 research papers regarding your topic. In my suggestion, it's good because up to 200, you will get a lot of number of articles which may be regarding your thinking. जो हमने सोचा वही काम ऑफ कोर्स किया होगा, तुम एक नई सोच तो लाओगे नहीं, और कहाँ से लाओगे तुम भी सोच? तुमने भी जो 11th 12th बीएससी एमएससी में पढ़ा है, तुम वही तो सोच रहे हो कि आई हैव टू रिमूव द डाई फ्रॉम वाटर यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दैट इज यूवी एनालिसिस, or I would have to remove the calcium from water. It is a high content. Even iron can be a high content, may be harmful for us. High iron content in your body can, demetabolize your system, even though it's very essential element in your body to hemoglobin. But iron की भी एक limited मात्रा, and there is no relaxation from World Health Organization कि अगर आयरन की कंसंट्रेशन जो भी उसकी रिकमेंडेड वैल्यू है पीपीएम में, उससे अगर ज्यादा हो जाती है और आप ड्रिंक करते हो और आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इट मे बी लेथार्जिक एज वेल. सो इट्स ओके, व्हाटसोएवर यू आर डूइंग यू कैन ऑप्ट. आपके यहाँ मैंने बताया फ्लोराइड डिटेक्ट करना था, 400-500 सैंपल कलेक्ट कर लिया, वो फ्लोराइड आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड खराब हो गया, लेकिन मेरे पास यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो काम कर रहा है. तो अब मैं उसके थ्रू या तो अपनी कुछ ऐसा कोई chromatogenic reagent ले सकती हूँ, that is chromogenic reagent that can show colored complex. You know some Werner theory with you in your mind. So either a metallic ion can be binded, तो हम कोई स्पेसिफिक कलर्ड रिएजेंट फॉर्मेशन करके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बना करके, जैसे कि आयरन को KCNS से आप कलर्ड कर सकते हो, पोटेशियम थायोसाइनेट से कर सकते हो, 110 फिनेंथ्रोलिन से कर सकते हो. तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन 200-300 सैंपल को अब मैं हाई आयरन कंटेंट पे रिकॉग्नाइज, क्योंकि मेरा अब ये हुआ, नो डाउट यू हैव वेस्टेड अर्लियर सैंपल, लेकिन अब जब हम बीच में स्टक ही हो गया, मेरे पास फरवरी तक मुझे रिजल्ट देने थे, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस साइंस. ड्यूरिंग द प्रोसेस यू गॉट अ हर्डल, बट नाउ however in synopsis you mentioned fluoride removal, but in case of that earlier sample you did fluoride, but fluoride can bind with some calcium fluoride. Calcium fluoride as a simultaneous analysis can be done. So EDTA titration can also be followed. So now you are correlating the things, that availability of the water samples up to that. When my fluoride ion ion selective electrode got stuck, I have done only 100 samples out of 200. That is my 50% job I've done. तब 50% samples तो मैंने एनालाइज किए हैं ना. तो अब मैं ये एडामेंसी रखूं कि मुझे उन 200 सैंपल पे ही फ्लोराइड का ही कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, तब तो क्या होगा, वो रॉकेट साइंस होगा. लेकिन चूंकि अब मेरे पास टाइम कम बचा है, तो मैं अब क्या करूंगी कि कैल्शियम या आयरन से उसको कोरिलेट करने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज में से कुछ और लिटरेचर रिव्यू करके उस फ्लोराइड को कैल्शियम के साथ कंपेयर करके भी तो अपना रिजल्ट आउटपुट में दे सकती हूँ, because it is also reviewed in literature. You got it? Okay, meanwhile, that's why I told you it's not a rocket science. When you are starting your research, you have planned to analyze 200 water sample for that fluoride analysis. But in between, you have a tenure-based project in which, and then I have to analyze. It's my strength that मैं कैसे अपने result को represent करती हूँ logical approach के साथ. Logically, I am proving that calcium fluoride is a stable compound and calcium is existing in water. You know that. So it is a logical approach. A scientific data has to be in a logical way. ऐसा नहीं कह रही हूँ कि भाई फ्लोराइड को बाइंड करने के लिए कैल्शियम था पानी में, तो कैल्शियम फ्लोराइड बनेगा ही पानी में. तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आई नो दैट, and a logical approach is opted to analyze parallelly the calcium as well in that 100 sample.
because 100 plus 100, now my result may be up to the mark in 200 sample, क्योंकि हमारी रिजल्ट और डाटा लिमिट में भी होने चाहिए और रिप्रेजेंटेटिंग मैनर में भी होने चाहिए. अगर मैं सिर्फ 100 सैंपल का एनालिसिस करती हूँ तो मेरी थीसिस इम्परफेक्ट लगती है. बट इफ यू कंपेयर दैट with these all samples, I will have to check it whether calcium or iron is also correlated with the existence of that. That would become my output now. So this may be a directional approach. Your guide can help you in that manner when you stuck over. Because a good guide is that which can show you the path when you stuck, hang over the things. है ना? कि अब क्या करें मैडम, टाइम कम बचा है, मैं तो 100 में ही कर देता हूँ. 100 में ही करने से हमारा जो रिसर्च वर्क है वो लिमिटेड हो गया. लेकिन अगर उन 100 को मैं कंपैरेटिव अप्रोच के साथ ये सिद्ध करूं कि हाँ भाई फ्लोराइड के साथ साथ, क्योंकि पानी में तो ऑलरेडी बहुत सारे आयन है, तो आई कैन डिटेक्ट दैट एज वेल, आइदर विद EDTA टाइट्रेशन or you can do with another reagent like 110 phenanthroline complex for the iron case. So a wide base of your knowledge must be there, which can help you to formulate your examples with analysis of your result in a right manner. Okay, then we have designed a research methodology, but in a process methodology, you can weigh out in some cases, because it is unconditional way, when you are not able to टेन्योर बेस्ड कंप्लीशन ऑफ योर वर्क. तो उसमें हमें क्या करना पड़ा, हमारी हाइपोथेसिस जो थी उसको कोरिलेटेड मैनर में एनालिसिस करते हुए, कुछ पैरेलल रिजल्ट देते हुए अपने कंक्लूजन को एक स्ट्रैटेजिक मैनर में लॉजिकल अप्रोच के साथ बाइंड करते हुए मुझे आउटपुट देना पड़ा. ओके, so you can interpret now your result in a correlative manner to the calcium and iron as well. So it will look out your 3 chapter in structure. So consider that whether only that 100 sample may be enough to make your thesis work. It's not. Then you will have to parallelly do some another analysis in your thesis topics. That is the motto of your capability. कि आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार, हमारे रिसोर्स के अनुसार, हमने जो भी करा उस कैरी आउट वर्क के अनुसार इंटरप्रिटेट हम कर पाए, फिर रिपोर्ट कर पाए हमारे फाइंडिंग्स को, और फिर उसकी रिपीटेबिलिटी चेक कर पाए कि हमने रिपीट भी करा, नो डाउट, कि उसी सैंपल को दोबारा रिपीट करा अंडर अ सेट ऑफ आइडियल कंडीशन, तो क्या रहा उसके रिजल्ट्स का. अंडरस्टूड? So this is the whole process which I have so far discussed with you. First step, define the research problem. You have to define, review the concept and theories up to the mark. आपने जो problem ली है उसको review कीजिए. You will have to review the concept with the help of reviewing the literature with the available resources. आपके पास जो रिव्यू है उनके अकॉर्डिंगली आपने जो टॉपिक चूज करा है उसका हमने लिटरेचर रिव्यू करा. So these are the 7 basic steps involved in research method and the process. The whole process of research can be carried out in these basic 7 steps of research process. You will end up with the interpretate and report, that is your thesis, dissertation or report. So the first step, you will have to be a keen observer to find out and define your research problem. Then in the second step which you are going through, आपने प्रॉब्लम कुछ सोची होगी, अपने गाइड से डिस्कस कर रहे होंगे, रिव्यू कर रहे होंगे लिटरेचर का, कि रिव्यू द कंसेप्ट ऑफ थ्योरीज, रिव्यू द प्रीवियस फाइंडिंग्स, कि मैं जिस काम को करना या करना चाहती हूँ क्या उस पे पहले किसी ने काम किया है तो कैसे किया है, either simply volumetric, titrimetric, spectrophotometric or any kind of instrumental helps, any kind of. तो आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, being a keen observer of the society in the benefit of the society. Then formulate your hypothesis, कि मैं ये सोचता हूँ कि ये चारों तरफ जो हो रहा है इसमें ये होना चाहिए, either nitrate is higher, either fluoride is higher, either uranium may be high, because we are living in the Rawat Bhatta scenario. So you know that nuclear power station is surrounding about you. So we can find out the problem, and hypothesis may be like that. Uranium analysis can be done in water sample as well, which may be, some mutagenic concept, carcinogenic to us. Why cancer is so much in around society. So there may be some
facts in your mind which are, starting thinking. कि आपने सोच के ये सोचा हो कि भाई कौन सी प्रॉब्लम पे काम करूंगा या करूंगी. You will have to find out your skills according to. Then design your research, include your sample design. After formulating a hypothesis, आपने hypothesis बनाई. Design your research, that how would you be going to analyze your data, collect your experimental facts, how would you have to analyze your result. कि अगर मैं कोई एड्सॉर्बेंट बना रही हूँ तो मुझे उसका बेड सरफेस एरिया एनालिसिस करना पड़ेगा. अगर मैं कोई फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस करना चाहती हूँ तो मुझे उसके लिए FTIR एनालिसिस करना पड़ेगा. यदि मैं कोई डाई रिमूवल पे काम करना चाहती हूँ तो मुझे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे काम करना पड़ेगा. यदि मैं कोई सेंसिटिव आयन इलेक्ट्रोड पे काम करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा. सो यू विल हैव टू डिजाइन द होल रिसर्च मैथोडोलॉजी इन द फोर्थ स्टेप इन अ प्रॉपर रिसर्च डिजाइन, इंक्लूडिंग अ सैंपल डिजाइन. कि हमने दूसरों को देखा, उन्होंने भी इसी तरह से काम किया, लेकिन विदाउट चेकिंग योर रिसोर्सेज हम दूसरों की नकल तो नहीं कर सकते. भाई उसने तो ICP-MS काम दिया था, इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा टेक्निक. Whether I can use that ICP-MS? No, because I don't have that facility in my laboratory. How could I do? So I will have to concentrate about my resources first and then accordingly plan my research design. Okay. There are collection of data, then execution, analysis, whether my hypothesis matched with my collected data. Yes, I thought that there may be higher nitrate, there may be some high fluoride in water, but whether it is matching to my hypothetical approach. If so, how much percentile it is, you have to go through with a statistical approach. Tabulated data, maybe, find out with the help of many of the statistic approach. You have different statistic approach in your coming lectures, where you can find out regression analysis, you can find out many of the other statistic approach to represent your data. Okay, so after hypothetical test, you will have to conclude your result, whether my hypothesis was right up to 80% or up to 20%. It depends upon the collected data. Okay, so don't hesitate whatsoever you find, because 20% is good enough. कि भाई मैंने 200 सैंपल लिए और उसमें से मेरे पास केवल 40 सैंपल ऐसे निकले जिनमें हाई फ्लोराइड था. लेकिन सोचिए, उन 40 सैंपल से अगर 2 लोग भी कैंसर के शिकार हो रहे थे या बीमार हो रहे थे, तो आपने रिकमेंडेशन दिया कि ग्राउंड वाटर सैंपल ऑफ दैट हैंडपंप शुड बी रेड क्रॉस्ड, should not be drunk by the local people around the near localities. So it's not necessary that you thought that कि हमारे यहाँ 80% सैंपल जो होंगे वो गलत निकलेंगे या 10% is enough, क्योंकि saving a single life is boon for us. कि अगर हम एक सिंगल लाइफ की बचाने में भी हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी की, तो बूंद बूंद से सागर भरता है. तो हम अपनी उस बूंद से अपनी सागर को भरने की तरफ बढ़ सकते हैं. तो हमने उस बूंद से एनालिसिस जो करा, क्या वो हमारा रिजल्ट जो था सोसाइटी के बेनिफिट के लिए था? तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा हो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ इन अ रिसर्च एनालिसिस कि यस, मैंने जो काम किया है वो सोसाइटी के बेनिफिट के रेस्पेक्ट में किया है, और हमने ये पाया कि 200 में से 40 ग्राउंड वाटर सैंपल ऐसे थे जिनमें कि 1 ppm से ज्यादा वाटर जो था वो कंटामिनेटेड था, and it is not well soothing for the purpose of drinking water supply. So you recommended your result in a proper manner. Okay, so that would be your analysis of data. So in that case, you have to feed forward and feed backward. Otherwise, feed forward is that review literature जहां आपको FF दिख रहा है, पहले स्टेप से 7वें पे गए कि क्या हम सीधा अपने प्रॉब्लम को राइट मैनर में रिप्रेजेंट कर पाएंगे. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, दैट इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड. तो हमें पहले से 7वें पे भी जंप करना अपनी हाइपोथेटिकल अप्रोच में इन अ रिसर्च प्रोसेस. तो हमें कंक्लूजन पढ़ना होगा. जिस रिव्यू आर्टिकल को आप पढ़ रहे हो उसका आपने प्रॉब्लम अपने जैसा पाया, लेकिन क्या उसका एनालिटिकल डाटा फीड फॉरवर्ड जो होगा डिजाइन जब आप रिसर्च की करोगे, आई टोल्ड यू दैट इन द 4th स्टेप यू कैन सी रिसर्च डिजाइन, इट इज को रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ डाटा, दैट इज फीड फॉरवर्ड. ओके, दैट मीन्स कि जो मैं रिसर्च डिजाइन कर रही हूँ, क्या उससे प्रॉपर अपनी हाइपोथेसिस का प्रॉपर एनालिसिस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. तो ये चेक करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है. सो अंडर दीज स्टेप्स यू विल हैव टू चेक आउट द फीड फॉरवर्ड एंड फीड बैकवर्ड एज वेल इन मेनी केसेस.
Okay. In feed backward, you have to collected data must be connected with the report. जो हमने रिपोर्ट बनाई है उसको बैकवर्ड में जाके एनालिसिस रिपोर्ट से मैच करते हुए रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज अ गुड कंक्लूजन विल बी कनेक्टेड विद योर एनालाइज्ड डाटा. सो दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड, फीड बैकवर्ड, एंड दैट इज फीड फॉरवर्ड. तो पहला स्टेप जो आपका है, व्हेन यू आर फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च, check your resources first, check your strength first, delimit your research up to the level of the capabilities of your institution as well as your own strength and skills. No doubt your guide is here to help you, but work must be done by the scholar. Identify your own strength, your own interest. Okay, and your guide is sufficiently enough to guide you in your field of research. In my way, I always inspire my scholars that suggest from your topic of your interest. If he or she refuses, then I will make my own. Anyways, so try to develop your own strength, try to develop your own interest topic, and interpret your report and conclude your result in a manner that would be helpful for society. Okay, this is whole process of research. Now coming to these all I have already discussed with you: formulating a research problem, reframing it, framing, reframing, discuss the problem with this society, staff member, take a view of old reviewers with a good journal impact factor journals, not local ones. Second step which you are going through, I hope so you have identified your problem, or till now you may be. So start your review literature with using some journals of good impact factor, no doubt books, finding online reports, pollution control report board. In my case, I have to check WHO reports, UNESCO reports, consider European Commission reports. Not while you are reviewing your literature, sky is your limit. Okay, here you don't want to delimit. यहाँ पूरी दुनिया में क्या चल रहा है हमें ये देखना है. अपनी रिसर्च को डिलिमिट कहाँ करना है, अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. लेकिन रिव्यू ऑफ लिटरेचर मस्ट बी डन अप टू द mark of the world criteria. And of course, e-library is also helpful for you. Go through with review of literature, develop your keen interest in the problem which you find out. Of course, then develop your hypothesis. Hypothesis is that which method you are going to opt, how you have to analyze your data. So which and how you have to do will make your hypothesis, how much capable you are, and which method you can do in your manner up to the resources available at your hand. Okay, so it should be an original objective examination of data, how you would like to examine your data, that depends on. So carry out that research facility as per your specializations. So आपकी जो भी specialized field है उसके accordingly, आप अपनी skills के accordingly you can do that. Okay, develop that hypothesis in the third step as I told you, and then preparing a research design. It may be a qualitative in case of arts category, commerce, arts, business. But in our cases, in research category, where we are belonging to the scientific genera, we will have to majorly design our result in experimental form or in non-experimental form. Majority of us will work in experimental form, in which you collect primary data as per your experimental facts. So you will have to do that. Non-experimental or theoretical and computational design are nowadays going on. You can do computational research with the field if you have expertise in your guide as well as yours. Then you can do non-experimental data. Nowadays, virtual laboratories are also going on. So virtual laboratories development, you can do in non-experimental manner as well, because to develop the societal ways, we need equally both the data collection. Only and only experimental data would not be able to, increase the societal development, because non-experimental point of view is also important, because they can correlate, compare the available resources in non-experimental ways. However, in scientific era, I don't know, but in the, at the university level,
how much support you will get for non-experimental data. But in my point of view, it has the equal weightage, because to develop a research world, you need experiment as well as the non-experimental comparative studies, as well as some scenarios must be going on in right manner. The computational approach say, without disturbing the ecosystem, how we can go ahead with non-experimental ways to compare the psychological. Why students are not doing research? Why? Because they are not performing even a single experiment starting from 11th. I'm sorry to say the coaching hubs are doing run. How many of you are interested? How many of you have shaken your test tube in 11th standard? Up to 11th, 12th, UG, PG. In PG, we are saying our student, this is the capillary tube, my dear. It is an ignition tube. Many of our students come from that background. They haven't seen a capillary tube or the ignition tube. So what's going on? Why the interest of students are not in the field of research? Not everyone has to become a doctor or an engineer. What Nobel Prize India में कितना मिल गया? Why? Because we don't have that keen interest, my dear students, my scholars. You are the young generation. You can develop the scenario now. I'm trying, no doubt. I'm opposing in so many cases. मैं करती हूँ कि मुझे ये नंबर नहीं देने उसको, क्योंकि बच्चा रेगुलर नहीं है. लेकिन कितना सिस्टम के खिलाफ हम जा सकते हैं up to the level. However, you are the youngsters. I am trying at my level. You should try your own. That how we can develop our students nearby, our cousins, that you should do, perform your experiment. New education policy, no doubt, is good for all of us, giving strength to the skills. And even coachings are guided for that to develop some experimental and skill-based knowledge in our students. That's why nowadays they are running some practical aspects as well. So I request you to be the part of society and recommend the skill-based learning, as well as try to inculcate the knowledge in experimental way to our students, our youngsters, our cousins, that you should go ahead. Okay, I've already discussed so much about data collection that can be in experimental manner in our case. However, it is a common global platform. So analysis of data collection can be in different manner: documental, record, observation, interview in case of historical forms, queries, oral histories. But in our case, in scientific media, we are used to perform some experiment to collect our data, that are primary resources of data, because you own the source of data. That is called primary source of data. If you are going to compare some other data, you become the collecting that primary source data, and a comparative analysis, then it becomes secondary source. Okay, I hope you will learn more about, because my topic is method and process of research. I have to discuss from starting enough, formulating a problem, to reporting your result. That is the end of your thesis dissertation. So I'm just touching each and every topic of your process. But in-depth knowledge must be given by the expert of each and every expertise hand. That's why you are running course month for 1 month. Then analysis of data, you have to either conclude your analysis, content analysis, hypothesis analysis. You can do analysis with the help of statistical data analysis. So statistical regression analysis can be done. The collected data must have to be analyzed in right manner with the approach, and they have to be tabulated properly, described properly. Result must be shown with the help of proper use of any analysis technique. You can take any regression analysis, content analysis, but your graphs, your tables, your data representation must be up to the logical way, and it should conclude in a right manner as others researcher worked. Okay, or that can be a better one from them. In many cases, someone reported that 76% of fluoride removal occur by the using some kind of adsorbent. And in where my case, I report that up to 98 percentile of removal of that by using a newer adsorbent, using a nanosorbent. That's the way that we reported our result in our article. So it may be like that.
Your analysis may be the superior for one, or it may be at least comparable to the result of research obtained by the other researchers. तो जो भी दूसरे रिसर्चर्स के रिव्यूअर्स के डाटा थे, दैट्स व्हाई इन दिस स्लाइड वी शोन यू दैट व्हेन यू आर formulating a problem, you will have to conclude your result in a right manner. तो उसी को लेते हुए हमने फीड फॉरवर्ड एक स्टेप अपन ने देखा था, पहले स्टेप से हम सीधा रिपोर्ट पे आ गए थे. तो वेल फॉर्म प्रॉब्लम, जो आपने प्रॉब्लम चूज करी है उसका एक वेल रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए. दैट इज योर डिसर्टेशन. कलेक्शन ऑफ डाटा must be represented in right manner. That is your thesis or dissertation. After analysis, you have to hypothesis testing, that already done. Whether it is matching, you can do in another manner with your hypothesis, or it may mismatch in many cases. Is a hypothesis. That's why इसको हम अभिकल्पना कह रहे हैं, अभिधारणा कह रहे हैं. मेरी अभिधारणा सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है. हमारा रिजल्ट जिस कैटेगरी में आया है, हमें उसको सही तरीके से रिपोर्ट करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग योर एनालिसिस इन इम्पैक्टफुल मैनर विल बी योर डिसर्टेशन. इट मे बी रिजेक्शन ऑफ योर हाइपोथेसिस, इट मे बी एक्सेप्टेंस ऑफ योर हाइपोथेसिस. But many of us believe that acceptance of hypothesis is a good conclusion. कि हम ये चाहते हैं कि हमने जो सोचा वो हो. ये तो हमारा बचपन से होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमने जो सोचा है वही हो. ये तो होता ही है, मैनुअल बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है. तो नो डाउट इट्स अ ह्यूमन नेचर. लेकिन इन मैनी केसेस कुछ अच्छे होने के लिए अच्छा होता है कि अगर मैंने कहा 80% वाटर सैंपल्स आर फ्री फ्रॉम फ्लोराइड, तो मेरा हाइपोथेसिस पहले था कि मेजॉरिटी ऑफ द सैंपल्स में कंटेन फ्लोराइड, एज इन माय केस व्हिच आई डिस्कस विद यू. लेकिन मेरा उल्टा निकला. मैंने सोचा था 80% हाइपोथेसिस में कि हो सकता है 80% वाटर सैंपल आर रिच इन फ्लोराइड कंटेंट. दैट इज द रीजन द पीपल आर गेटिंग येलोइंग ऑफ टीथ और डिफॉर्मेशन ऑफ देयर बोन्स. लेकिन जब मैंने अपनी हाइपोथेसिस को लागू करके टेस्ट रिजल्ट देखा, तो 200 में से 20%, 40 सैंपल ही मुझे ऐसे मिले जो कि रेड मार्क किए जा सके. लेकिन मेरा फायदा तो हुआ ना. तो मेरी हाइपोथेसिस 80-20 की बजाय रेशियो 20-80 हो गया. इट डजंट मैटर. लेकिन कुछ सैंपल तो ऐसे निकले थे जिसमें फ्लोराइड था. एटलीस्ट ये तो था कि फ्लोराइड रिच वाटर था उसमें. तो एटलीस्ट मेरी हाइपोथेसिस का कुछ तो मैचिंग कंसेप्ट निकला ना. एंड इट इज अ सोसाइटल बेनिफिट कि मैंने लोगों को उन 20% वाटर रिसोर्सेज पे रेड मार्क करने के लिए कैपेबल बनाया. कि मैंने वाटर वर्क्स में ये रिपोर्ट किया कि यस, ये जो वाटर सैंपल्स मैंने कलेक्ट किए हैं, इन हैंडपंप का पानी, इन कुओं का पानी, इन आम जनता के लिए अब पीने लायक नहीं रहा है, इसलिए प्लीज इस पे रेड मार्क करके इनको रोका जाए. तो ये मेरे 200 सैंपल का कंक्लूजन था. लेकिन मैंने सोचा था कि 200 में से मैं ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ सैंपल में फ्लोराइड आएगा. ज्यादातर में नहीं आया, लेकिन वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए था. तो ये नहीं आना भी मेरे लिए फायदेमंद था, मेरी जनता के लिए फायदेमंद था, मेरे भाई बंधुओं के लिए अच्छा था, मेरी उस लोकेलिटी के लिए अच्छा था. तो उस सोसाइटी की हेल्प के नजरिए से अगर मैंने ये सोचा कि मेजॉरिटी ऑफ सैंपल शुड बी रिच इन फ्लोराइड कंटेंट लिखा था, बट एज पर आवर कंक्लूजन वी कैन राइट दैट नाउ 20% of the samples are rejected by us and almost 80% are safe to drink. So our people are safe for drinking water supply of that hand pump or that well, जिसको हमने analyze किया. So in my case, the hypothesis 20-80 ratio may be changed, but it should be beneficial for us. Okay. Then after hypothesis, you have to discuss your, as I already discussed that, their hypothesis may be right or wrong. Wrong in the manner of if benefit of society. Proudly announce that. Don't hesitate. Chapter or section research report, it may be like that, but in a presented manner will be in a effective way. Main text, then and matter. Okay. Oh, I have to discuss one more thing with you, but time is going on so fast. As I show you the dumbbell, time is running very fast. Like in that case, observation is also there. You can see that formulate a hypothesis. In this case, I have to discuss with that sodium aluminum hydride doped
titanium was taken as an ionic radii of Ti plus 4. It's a good impact. कि मैंने ये सोचा था कि absorption kinetics के regarding, I will share the PPT with the concern, and I hope so they will circulate with that. You can read it because we have discussed it. कि sodium aluminum hydride is a reducting agent. तो इसमें टाइटेनियम +2 +3 +4 स्पीशीज की आयोनिक रेडियाई का रोल था. मैंने एक हाइपोथेसिस ये डेवलप करी, लेकिन ये सारे ही आयन जब सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डोपिंग के साथ करे गए तो इनकी आयोनिक रेडियाई कॉमन हो गई. इट मे बी अ जीरो वैलेंट टाइटेनियम एज वेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने सप्लाई कर दिए. दिट मे बी इंपॉर्टेंट दैट कि इसने इलेक्ट्रॉनिक रिडॉक्स सिस्टम में when it get reduced, it loses the electron to the system. You got it? Because I thought you all are from science, so you can got that. कि मेरी हाइपोथेसिस थी कि इनकी आयोनिक रेडियाई किसी चीज को इंपैक्ट कर रही है, लेकिन मैं ये भूल गई कि भैया इसमें सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जो कि हाइड्रोजन डिसॉर्प्शन करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होते ही एवरीबडी नाउ विल हैव अ इक्वल रेडियाई. तो ये इसका एक कंसेप्ट हाइपोथेसिस का एक एग्जांपल मैंने फाइंड आउट किया था कि ये जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से जो हम डिस्कस करेंगे तो उसकी आयोनिक रेडियाई बिल्कुल मैच होते हुए मिली. ये हमने एक्सरे एब्जॉर्प्शन फाइन स्ट्रक्चर से एनालिसिस किया, डी लेटिस साइज से एनालिसिस किया, सरफेस एरिया एनालिसिस से एनालिसिस किया. तो एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट मस्ट हैव सपोर्टिंग डाटा फॉर अस. तो उससे सपोर्टेड डाटा की हेल्प से, जैसा कि फ्लोराइड एनालिसिस से किया था, मच मोर कॉमन एनालिसिस एंड इट वाज अवेलेबल इन लिटरेचर, that is I have discussed with you, and predictions. Then there are mathematical models we can conclude over in many cases. So coming towards the last slides to make you relax that it is going to be ended at somewhere, you people, you can have further suggestion. As I told you, understand your interest of field qualifies you to make responsible and make you a reasonable hypothesis of your interest. Expertise of your guide will be always there. Do not strive to solve all problem in all the field. There are so many problems. If you are a keen observer, choose only one which you have in strength over there. You are expertise. Prepare a report in your conclusion remarks. It's 12:30. I'm taking your 2 or 5 minutes more, not more than that. Then small advancement lead to critical developments. छोटी छोटी एडवांसमेंट टेक्निक भी अगर आप डेवलप कर पाते हैं तो उसका कंक्लूजन इम्पैक्टफुल होगा, तो सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा. सो डोंट थिंक दैट कि एक ही रिसर्च में मुझे नोबेल मिल जाएगा. नोबेल मिलने के लिए बरसों की रिसर्च चाहिए होती है, और हमारा एम क्या है वो हमें जांचना पड़ेगा. इट विल टेक हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क with the help of literatures and everything. So in my suggestion, identify your resources, your own skills, and choose your research. Okay? Good luck from my side. All progress is born of inquiry. However, doubt is often better than overconfidence. ये बहुत अच्छी बात है. डाउट करना बुरा होता है, नो डाउट, लेकिन टू बी ओवर कॉन्फिडेंस, उसकी तुलना में अगर हम कहीं डाउट करते हैं तो इट इज बेटर, बिकॉज इट मेक यू क्वेरीफुल. फॉर इट लीड्स टू इंक्वायरी, एंड इंक्वायरी लीड्स टू एनी इन्वेंशन. सो बी observer, be a good observer, try to inquiry about the problems, inquiry about the surroundings, keen observe yourself, because all progress is born by inquiry, and a query in a right manner. Observe the things. I wish you good luck for your happy researching. I hope you enjoyed. If you have any queries, please feel free for 5 minutes. I can be 5 to 10, or you can email me on my portfolio. You can find. Thank you all for your appreciation. I can see so many hands, so many clapping, so many, but it would be, thank you so much to all for being patient listener. And anyone, if you wish to query, it's now open for 5 to 10 minutes. No one get motivated from this quote. No queries, no inquiries,
Either you Ma'am, got everything or ma'am, I nothing. ask something. Ma'am, can we Oh, use right. more than one research methodologies? In case if you wish to compare one with another, yes, of course you can do that. Yes, Taruna, I appreciate you taken up the queries and this quotation. Yes, Taruna, you can do like that. I told you a volumetric or titrimetric method can be compared with the spectrophotometric or GC chromatographic method. To compare that, how much reliable or data you have been collected, because everywhere the instrumental analysis is not available. So in many cases, if you review the literature, there are available more than two methodologies. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, thanks for being query. Anyone? So at my end, I would like to thanks, first of all, Director Research, Professor Reena Dadich ma'am, for giving me this opportunity to represent my thoughts on research methodology and process of research among you people. And extremely thankful to you people for being patient listener. And during some hurdles, you shown your patience. Thankful to the technical team of Director Research for providing this online platform to be a link between you and your research. And I wish you good luck. All the very best. Thank you, ma'am. Lot of thanks, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks to all of you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. कल आ जाना So, shall you have any lunch break from now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Till 1 p.m. Okay. From 1 p.m. So, it's now open platform to discuss with you all or someone else. What is the routine? Because I have given my time from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. So I thought that I would have to be. Otherwise, I may discuss that titanium example as well. Actually, lunch break is from 12:30 to 1 p.m. Oh, that's way. Okay, so I'm late by 7 minutes from my side. Anyways, Oh, no, ma'am. okay, enjoy your lunch. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.